Hello, my dear children. How are you? Once again, welcome to EduEve. So, my children, as I told you, we have already started. You all are studying with me nationalism in Europe, and I have made many videos. As I told you that it can be completed in two videos, but not as I seen. It is having a very long history. Ultimately, we have studied the whole journey of nationalism of all movements of new ideologies, everything we have read in this rise of nationalism in Europe. So, my children, today the topic which I have brought for you, as I told you, three questions are very important in this chapter. One we have already taken, that is French Revolution. Beside that, we having the unification of Italy, Germany, and Britain. These all are very important for examination. So for that purpose only I am taking it very separately. So let's start today with the unification of Italy. As I told you, every country is having a, a big journey, a history of the movements, the history एक बहुत लंबी जर्नी होती है स्टेप बाय स्टेप. वो सारी चीज़ें मैंने आपको जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया थी हाउ द नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्टेड, हाउ द मूवमेंट्स वर स्टार्टिंग, हाउ द डिफरेंट ideologies came into clashes. I told you about the liberalist, I told about the conservatism, आई टोल्ड यू अबाउट द रिवॉल्यूशनरीज जो कि एक क्रांति लाना चाहते थे अपने नई आइडियोलॉजी के साथ, अपने एजुकेशन के साथ में, और उसके साथ साथ जो मिडिल क्लास था वो सबसे ज़्यादा अब एक्टिव हो रहा था और इनकी एक्टिवनेस से ही कहीं एक रिफॉर्मेशन ये अपनी कंट्री में चाहते थे. सो यूनिफिकेशन को जानने के लिए सबसे पहले आपको इटली का मैप देखना बहुत ज़रूरी था. इटली बिफोर यूनिफिकेशन and the map of Italy after unification. So there is a lot of change because the previous Italy was totally divided in parts, in fragments. So we can say, in other words, so if we see the history of Italy, it was totally a country of fragments. Fragments means छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था. एक किसी मोनार्क का या किसी का पावर वहाँ पे नहीं था और सारे लोगों ने अपने कुछ हिस्से को जो कैप्चर कर लिया था. सो इट वाज डिवाइडेड इन 7 स्टेट्स. अब सी 7 स्टेट्स में जो कि पूरी तरह से बटा हुआ था, इसका एडमिनिस्ट्रेशन संभव नहीं था और बहुत सारी जो कोई भी कंट्री यदि टुकड़ों में बटी हुई है तो उसका भी किसी तरह से डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाता है. सो मैनी पीपल केम टू make the Italy to for the रीमेकिंग ऑफ द इटली वी कैन से. तो इस जो टॉपिक जो है मैं आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर करने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, क्योंकि दिस इज़ अ फॉरेन हिस्ट्री एंड इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड अबाउट द political division, about the geographical situation, about the different personalities and their credit. इसी कारण से मैं आपको ये सारी वीडियोस अलग अलग दे रही हूँ. तो जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली है, इट वाज नॉट आल्सो पॉसिबल बाय वन पर्सन और बाय वन अथॉरिटी. इट वाज अ वेरी बिग प्रोसीजर टेकन प्लेस एंड द मैनी पीपल केम टुगेदर एंड दे जस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड देयर पार्ट ऑफ डेडिकेशन और उसके साथ ही इटली का यूनिफिकेशन हुआ. ये जो है ये चीज़ें क्यों बढ़ रही थी, एज आई टोल्ड यू इन जर्मनी यूनिफिकेशन ऑल्सो आई टोल्ड यू दैट why they were inspired by many of the revolutions that were taking place time to time, and the French Revolution became a very big example for the unification of Italy, as they found that the middle class who were emerging as a big power, they were educated people, they were अवेयर पीपल, जिनमें अवेयरनेस थी और वो चाहते थे कि अब एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, नेशन मेकिंग हो. इसके लिए वो प्रयास अपने बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ा रहे थे. तो यूनिफिकेशन जो इटली है, इसमें ये सारे लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है. तो सबसे पहले हम लेते हैं जर्मनी का जो है, आप इटली का एक मैप देख लीजिए जो पहले का मैप है. तो वी हैव टू सी एज द इटली वाज नोन एज द कंट्री ऑफ फ्रैगमेंट्स. विच वर द फ्रैगमेंट्स, कैसे टुकड़ों में बटा हुआ था, कौन कौन से हिस्से में कौन सा रूलर था जो कि उसने इसको कैप्चर किया हुआ था. तो लेट अस गो फॉर दैट. सो लेट मी रीड 2 to 3 lines that will be very much clear for you.
During the middle of the 19th century, Italy was divided into seven states, of which only one, Sardinia Piedmont, was under the rule of an Italian king. That pure king, we can say, जो Italian king था, उसके अंडर में जो हिस्सा था उसका नाम था सर्डिनिया पीडमोंट. अदर देन द नॉर्थ, द सेंट्रल पार्ट एंड द सदर्न स्टेट were under the Austrian control, the Pope and the domination of the Bourbon kings of Spain, respectively. So, three names I have read. Which are these three names? The northern, central, and southern. These all area were captured by whom? By the Spanish king, by the Austrian king, as well as by the Pope. Pope, you know, in European countries, especially if we say the Pope, the fathers of the church, they were having a very, very prominent role. They were not only performing the religious rituals, they were not having the domination in religion, but they were having equal interference in political system also. तो ये तीन ग्रुप थे, स्पेनिश किंग, ऑस्ट्रियन रूलर एंड पोप. दे वर ऑल कैप्चर्ड द एरिया ऑफ सदर्न, सेंट्रल एंड नॉर्दर्न एम्पायर ऑफ इटली. तो इस तरह से ये पूरा डिवाइडेड था, टुकड़ों टुकड़ों में बटा था. नाउ हाउ द एफर्ट्स स्टार्टेड. तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि इटली जो पहले का जो मैप था उसको आप देख लीजिए कि किस तरह से कौन कौन सा हिस्सा कहाँ पे किसके अंडर में था. बट नाउ वी आर गोइंग टू रियली स्टडी अबाउट द पीपल, अबाउट द अथॉरिटीज, अबाउट द रिवोल्यूशनरीज हु रियली डिड अ वेरी great work to unification of Italy. So one by one I am telling about every one, and I will be also suggesting you whenever you are going to prepare this chapter, you make a notes about these all political authorities one by one, because it can come in short notes, it can come in big question also, and for other exams also in future these people will be surely asked in any form to you. So let's know about the first person who has contributed in the unification of Italy. Let me read. During 1830s, Giuseppe Mazzini, the leader of Republican Party, sought to unite these regions into an Italian republic. He firstly started the process of unification of Italy. At that time he was in exile. Exile मतलब वो उसको देश निकाला उसको मिला था, लेकिन उसकी जो है एक जो प्रोसेस चल रही थी लोगों को लेकर के, उसने एक जो ग्रुप बनाया था, इट इज़ नेम्ड एज यंग इटली. ये क्या था? 1831 में ये सोसाइटी बनाई गई थी. इट वॉज अ सीक्रेट सोसाइटी जिसमें कॉन्फिडेंशली द पीपल वर वर्किंग एंड दे वर ऑल working together for the unification of Italy. It was founded to bring about regeneration of Italy through education. Which type of people they were? They wanted to bring awareness, they wanted to bring regeneration in Italy by education. शिक्षा की अवेयरनेस से ये सारे लोगों का जो ग्रुप था, सीक्रेट सोसाइटी जो यंग इटली था, उसमें सारे लोग थे, एजुकेटेड पीपल थे, और ये अपनी एजुकेशनल अवेयरनेस से इटली का यूनिफिकेशन करना चाहते थे. हाउ मच सक्सेस दे रिसीव्ड, कितना सक्सेस उनको मिली. इट वाज, वी कैन नॉट से दैट इट वाज टोटली फेल्ड, लेकिन एक अपना रोल दे करके ये क्रश हो गया, और अल्टीमेटली 1831 एंड 1848 इनका जो जिस प्रोसेस से ये स्टार्ट यूनिफिकेशन हुआ था ये वहाँ पे ख़त्म हो गया. आफ्टर दैट we are going to study about the Victor Emmanuel. As I told you, the area of Sardinia Piedmont that was under the Italian king. The name was Victor Emmanuel. He also did a great effort for unification of Italy. But for a king it is not possible to do the all efforts. For that he need the support of his ministers. One of the minister, and I should say he is the major name in, and everyone know the name of Cavour, who was the chief minister of Victor Emmanuel, and to whom he has chosen, who has taken the support of this person, chief minister Cavour, and they started the efforts for unification of Italy. How much he has credited that
he is known by the name of the real maker of Italy. Who? The chief minister of Victor Emmanuel is known as the real maker of the Italy, because he came with the vision only to unite the Italy. He was not a Democrat, he was not a revolutionary, he was not running any revolutionary movement. किसी movement का हिस्सा नहीं था. Only he came with the purpose to unite the Italy. तो ये हाउ ही डिड इट. अब इसके सामने जो टारगेट था वो ये था कि नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड सदर्न एरिया को कैप्चर करना. एज ही वॉज अ वेरी बिग डिप्लोमेट, बाय हिज टैक्टफुल पॉलिसीज ही ज्वाइंड विद द फ्रेंच रूलर एंड ही ट्राइड टू डिफीट द ऑस्ट्रियन किंग. एज आई टोल्ड यू कि एक बड़ा एरिया जो ऑस्ट्रियन किंग के अंडर में था, पोप के अंडर में था और स्पेनिश किंग के अंडर में था. तो ऑस्ट्रियन किंग के अंडर में जो हिस्सा था उसको उसने ही मेड दैट good relation with France king, and he became able to just capture take back the area of Austria, and in this way he succeeded to capture some of the part. कैवूर ने ऑलरेडी ऑस्ट्रिया का हिस्सा ले लिया था और बहुत अच्छी तरह से वो एक प्रोसेस के थ्रू यूनिफिकेशन के लिए चल रहा था. नाउ द थर्ड एंट्री, द नेम यू आर hearing is Garibaldi. Now, who was Garibaldi? Garibaldi is a leader of a revolutionary movement. What was the name of his movement that he was running? It was known as Red Shirt Movement. ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है, वन लाइन क्वेश्चन में आ सकता है. So just keep reading of all the lines, because you will get many names, many events, many dates, and you have to keep always in mind. For that I am saying make a very good chart and prepare all these things. So come back now again to Garibaldi. Garibaldi was a leader of a revolutionary movement, and he was running a movement for the workers, for the peasants, and it is known as the Red Shirt Movement. उसकी एक अपनी आर्मी थी. एंड इसी समय जब ये 1860 में ही जॉइंड कैवूर एंड दे मेड द कंबाइंड एफर्ट्स. इनके एफर्ट्स से टू सिसलीज का जो एरिया था, द किंगडम ऑफ द टू सिसलीज एंड द स्पेनिश किंग वाज आल्सो डिफीटेड इन 1861. जो मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ एरिया स्पेनिश किंग के अंडर में था. ये सारा एरिया इसके अंडर में एक जॉइंट आर्मी बना करके कैवूर एंड गैरिबाल्डी they both combined, and they succeeded to just capture the area or to take back the area of Italy. So finally this was the process. As I told you, the history, if you see, the Italy was known as the country of fragments, and this fragments was how it was taken back, and how the regeneration of Italy, how the making of Italy became possible by the sincere contribution of Garibaldi, Cavour and Giuseppe Mazzini. These are the three personalities, their name always remembered in the history of Italy. तो आपने, I think you all have understood this history, and finally, yes, we have not taken the last. Finally, by all these efforts, the dream of unification of Italy came to be successful, and Victor Emmanuel, that name already I told you, जिसके अंडर में सर्डिनिया पीरमेंट का एरिया था, अब वो ऑफिशियली प्रॉपरली एक किंग के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया. ही वॉज प्रोक्लेम्ड एज अ किंग ऑफ इटली, एंड अल्टीमेटली द प्रोसेस ऑफ इटली मेकिंग, द रीमेकिंग ऑफ इटली वॉज became possible. So this is the history of Italy. I think you all have understood. As I told you, just revise my video very properly so that it will be printed in your mind, and whenever you are writing the answer, every event will be coming to you date wise, and you can write everything in order. When you are making a very systematic answer with all the information, surely you are going to get very good marks. And now I think this chapter is over. During lockdown you can go only for one chapter. After that, surely I will be bringing you more chapters related to civics, geography, English, and with that I am bringing some good activities to you. I am bringing some good stories, because children, I know you want to listen the stories, the good stories, the message giving stories, but you are not
interested to go to the library. So I have taken this responsibility also. I am bringing to you many good stories of great writers. I am very soon I am going to bring you the good analysis of the stories of Rabindranath Tagore as I am going to read it. So surely I will be sharing it with you, and as well as in my next video you can see maybe the next notification, as I promised you that I am bringing the CBSE notification to you at proper time to just clear your doubt. Till then it is over. Just subscribe my channel and see my all videos to get all information. Thank you children.